Hi students, this is about chemical thermodynamics chapter number 4 of न्यू सिलेबस 12th साइंस। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा different type of terms used in the chemical thermodynamics. Now we are going to derive two equations in this session, that is pressure volume type work and maximum work. Work is equivalent to energy. Therefore, here consider a cylinder in which some gas is filled with some small pressure P, and here is a piston which is frictionless. There is no friction with the wall of this cylinder, and it can move up and down. Some external pressure, we can say that is atmospheric pressure, is applied here. Therefore, in this case, the pressure is nothing but the external pressure, which is equivalent to atmospheric pressure. We know that force per unit area equal to pressure, that is external pressure. Therefore, force can be written as P external into cross-sectional area. A is the cross-sectional area of the cylinder. We know work done when a gas expands against this pressure. This piston moves through the distance T. Therefore, work done W equal to force into displacement. This is actually dot product, as I told you in last lecture. Therefore, W equal to force, where force is nothing but the pressure, external pressure, into area into distance traveled. We know area, cross-sectional area into distance or cross-sectional area into height is nothing but the volume. Here is the change in volume. This change in volume W I can write as a P external into change in volume. This force is applied, this pressure is applied on it. That's why it is taken as negative. Therefore, its sign is taken as negative here. This is external force here. This is also external force, I can say it this way. Means P external negative, the change in volume is from V1 to V2, means V2 minus V1. Therefore, this is the expression for pressure volume type work. Some cases arises here. V2 may be greater than V1 or V2 may be less than V1. If V2 is greater than V1, this subtraction is positive. It is multiplied by this, the work done W will be negative. If V2 is less than V1, this subtraction is negative. Negative with negative, the work done is positive. Therefore, here in these cases, in one case the work is done on the system, and in another case work is done by the system. Means V2 is more, there is an expansion. There is expansion, therefore work done by the system. V2 is less, means it is a compression. It is a compression. Therefore, these are the possible cases. One more thing. Free expansion. Free expansion means here the pressure is, external pressure is equal to 0, that is in vacuum. In vacuum, there is no external pressure. Even there is a possibility of expansion or compression. In that case, if delta V is some value, has some value, even though the pressure is 0, hence work done in this case is 0.
Therefore, in vacuum, either during expansion or compression, the work done is zero. In this way. Now, here units of energy and work. As you know, energy is measured in joules. That 1 joule equal to 1 kilogram meter square per second square, and it is equivalent to pressure into volume, that is Pascal into cubic meter, which we have recently seen. Work done equal to minus P external into delta V. एक हमको मालूम है कि 1 bar equal to 1 bar pressure is equal to 10⁵ pascals, means 10⁵ kilogram per meter per second square. अभी सपोज वर्क में अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर इज इन बार, वॉल्यूम इज इन डेसीमीटर क्यूब. डेसीमीटर क्यूब को अगर कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में तो इट इज 10⁻³ मीटर क्यूब. अगर 1 बार को कन्वर्ट करना है एम के सिस्टम में तो 10⁵ किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर. देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अभी देखो क्या मिलता है हमको. 10⁵, 10⁻³ that is 10⁻², that is 100 kilogram as it is. Meter raised to -3, meter raised to -1, that is meter square, and that is second raised to -2. This is unit of work. This unit of work is nothing but the joule. Therefore, this is equal to 1 joule. Means this work done equal to 100 joules in decimeter cube and bar units. In this way, this is the unit of this. 3. Let us see about the concept of maximum work. इससे पहले हमने देखा कि प्रेशर वॉल्यूम टाइप वर्क. प्रेशर वॉल्यूम टाइप वर्क मीन्स एट अ स्टेज इन वन स्टेट इट हैपेंड. सी दिस, वो जो पहला ग्राफ था, सपोज इट इज लाइक दिस. It is change in volume, it is suppose pressure, and initial condition was this, final condition was this. This is P1 V1 and it is P2 V2. It went straight. Then area under this is nothing but the work done. If you say this, it is straight line, it is one step. एक ही स्टेप में हमने ये सब किया था. सपोज द सेम कॉन्सेप्ट इज यूज, उतना ही हम एक्सपांशन कर रहे हैं. इन सिलेंडर इनिशियल वॉल्यूम इज V1, फाइनल वॉल्यूम इज गोइंग टू V2. सपोज 3 kg और 30 ग्राम वेट इज केप्ट समवेयर हियर, दैट इज द एक्सटर्नल प्रेशर. पहले केस में हमने क्या किया, इस स्लोली उसका वेट निकालने का कोशिश किया. वेट निकालने का कोशिश किया मतलब जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको रिड्यूस किया हमने. एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूस किया तो यहां पर ये जो सिलेंडर का जो पिस्टन था ये पिस्टन स्लाइटली ऊपर आया. देयर इज स्लाइट चेंज इन वॉल्यूम. उसके बाद फिर से वेट निकाल लिया, देयर इज स्लाइट चेंज इन वॉल्यूम. मतलब हमने 2 या 3 या 4 स्टेप में हम कर सकते हैं ऐसा. सपोज same initial condition and this is the final condition. Actually इसका behavior graph है, it is like this. Suppose अगर इसको हमने स्टेप्स में करने की कोशिश किया तो फर्स्ट स्टेप विल बी, इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं. पहले स्टेप में अगर कंसीडर किया हमने तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क विल बी दिस मच. अगर दूसरे केस में दूसरे स्टेप में करने की कोशिश किया द प्रेशर वॉल्यूम टाइप विल बी वर्क विल बी दिस मच. एंड थर्ड में हमने करने की कोशिश किया तो इट इज सपोज गोइंग लाइक दिस अप टू हियर. इमेजिन करो कि ऐसा जा रहा है. दिस मच इज द प्रेशर वॉल्यूम वर्क. दोनों सेम है. This condition is P1 V1, this condition is P2 V2.
अगर इसके हिसाब से देखेंगे, this much is the work done, area under this graph. Area under this straight line is a work done in one step. But here, if it is taken in 3 steps or more steps, अभी यहां क्या हो गया, we got this much extra work, this much extra work, this much extra work. This is the extra work in each step we got. अगर सपोज हमने इसको नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा दी, इंस्टेड ऑफ 3 सपोज 10 स्टेप्स की, तो ये जो शेडेड पोर्शन जो है वो और भी बढ़ जाएगा. In 5 steps it will increase, in 10 steps it will increase. मतलब जितना स्लोली जाएंगे उतने नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ते जाएंगे और वर्क ऑब्टेन विल बी मोर. Hence, if the process is slow and in steps, ऐसा होगा कि हर स्टेप में ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स में बहुत ही कम डिफरेंस होगा. ड्राइविंग फोर्स इज दैट इज प्रेशर, प्रेशर फ्रॉम इनसाइड एंड प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड में से थोड़ा सा डिफरेंस होगा. और स्लोली नंबर ऑफ स्टेप्स में किया तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर वर्क. एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क. मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन्ड इन दिस केस and this is nothing but the reversible process. जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, रिवर्सिबल प्रोसेस. इट इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज अ इनफाइनेटेबल चेंज बिटवीन द ड्राइविंग फोर्स एंड द अपोजिंग फोर्स. एंड रिवर्सिबल प्रोसेस in both directions, as well as this is a slow process and it happens in number of steps. अभी देखेंगे हम लोग कि ये जो मैक्सिमम वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है. मैक्सिमम वर्क W max, इट इज डिनोटेड बाय W max. इसका डेरिवेशन हमको डिराइव करना है. सपोज अ स्मॉल चेंज इन वर्क हैपन in some external pressure minus P external with small change in volume. This small external pressure, if you see this P external pressure and P driving force, there is very small difference. बहुत ही कम difference है. Therefore, external pressure P external is nothing but the P plus dV. If we take it negative, P external equal to minus of P plus dV. If we put this value here, dW equal to minus of P plus dV, sorry, change in pressure into dV. अब देखो ये साइन जो है इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड ऑन इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. बुक में शायद नेगेटिव दिया होगा, वन एंड द सेम थिंग. इफ इट इज पॉजिटिव गिवन, नो प्रॉब्लम. देयरफॉर वी कैन टेक इट पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन. बुक में नेगेटिव दिया होगा. इफ यू मल्टीप्लाई इट बिकम्स माइनस P dV माइनस dP and dV plus or minus. dP is very small and dV is also very small. Therefore, product of these dP and dV both becomes very small and comes to 0. Hence, the small work dW is nothing but the minus P into dV, and the remaining term is neglected. Total work done in number of steps, that is nothing but the W max. Maximum work, that maximum work is nothing but the integral within the limits initial to final into dW. Here initial final changes क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है.
Here I can write minus P into dV, V1 to V2 changes हो रहा है. There is a change in volume, therefore initial final conditions are changing by volume. Therefore, from ideal gas equation, we know ideal gas equation is PV equal to nRT. Therefore, P equal to nRT upon V. If you substitute this value here, W max becomes minus integral of nRT upon V into dV, V1 to V2. Then taking out n is number of moles, that is universal gas constant, and temperature suppose constant, means the process is isothermal. Then integral of V1 to V2, 1 upon V into dV. As you know from integral, 1 upon x dx is ln x, logarithm to the base e. Therefore, minus nRT ln V from V1 to V2. Substituting these values, minus nRT ln V2 minus ln V1. Then minus nRT ln V2 upon V1, where ln is logarithm to natural base. Natural base is E. This I can write like this also, nRT log to the base E, V2 upon V1. This is for W max. लेकिन सपोज अगर हमको इसका बेस चेंज करें, क्योंकि अपने जितने भी लॉग टेबल्स अवेलेबल है, ऑल दीज आर टू द बेस 10. Therefore, W max I can write as minus nRT log V2 upon V1 to the base 10. अगर करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं. Whenever there is a change of base from natural to the base 10, at that time we have to multiply by 2.303. This is the expression in terms of change in volume. But the process is isothermal, as we know. That ideal gas equation, general gas equation, P1 V1 upon T1 equal to P2 V2 upon T2. It is isothermal, therefore temperatures are same. Hence, V2 upon V1 is nothing but the P1 upon P2. V2 upon V1 equal to P1 upon P2 हम लिख सकते हैं. तो ये जो W max है, in terms of pressure I can write 2.303 nRT log to the base 10 P1 upon P2. This is the final expression for maximum.